So today I am going to start set theory. So first we will start with the definition of a set. A set is a well defined collection of objects. Every collection of objects is not a set. The it should be well defined. हर हर कोई कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते, उसके लिए उसका वेल डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है. सो विच कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड एंड विच इज़ नॉट, दैट I will explain with the help of examples. Like I am taking the example of all states in India. So they are fixed, all states you can put it into a set. So सबके लिए सेम ही states होंगे तो हम लोग this collection is a well defined. First four prime numbers, like first four prime numbers are 2, 3, 5, 7. So these are four numbers, we can put it into a bracket. So this collection is a well defined. All students of your class. So एक क्लास में कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स होंगे, उनको हम लोग हर एक के लिए फिक्स कर सकते हैं. सो दिस कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड. इसी तरह से टॉपर्स ऑफ लास्ट सेमेस्टर इज़ वेल डिफाइंड. सो मेन फोकस है कि विच वन इज़ नॉट वेल डिफाइंड. So I am taking here example best cricketer of Indian cricket team. This is not a well defined collection, क्योंकि best cricketer बताना that depends upon the opinion ऑफ अ पर्सन. सो हम नहीं कह सकते किसी के लिए कोई बेस्ट होगा, कोई किसी के लिए कोई बेस्ट होगा, कोई तो उसके हर एक की अलग अलग ओपिनियन के कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट कलेक्शन है. सो दैट इज़ नॉट अ सेट. गुड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, दिस इज़ ऑल्सो नॉट फिक्स. सो कोई कहेगा कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है वो गुड है, लेकिन दूसरा कहेगा कि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग सेट जो है वो चेंज होएगा. सो दिस कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड. सिमिलरली इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ अ क्लास. सो कोई इंटेलिजेंसी मैटर करती है, किसी के लिए पेपर के बेसिस पे, किसी के लिए मैटर करती है आपके क्लास में रिस्पॉन्स के बेसिस पे. सो दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड, दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ओपिनियन. सो इसके लिए हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है. सो दीज थ्री कलेक्शंस आर नॉट वेल डिफाइंड. सो इफ कलेक्शन इज not well defined, then we can't say this forms a set. So these are not sets. So next is how to write a set. So I am taking example here, set of vowels of English letters. So English letters में जो vowels आ रहे हैं उसको हमने set की form में लिखना है. So first of all we use capital letters for defining a set. So let A is a set, we write it with the capital A, equal to sign is used and every collection is put into a curly brackets. और जो elements हैं वो हमें पता है कि vowels क्या होंगे, A, E, I, O, U, यही vowels होते हैं. और इनको हमने these are the objects of a collection, और objects इनको हम elements of the set भी बोलते हैं. So इन elements, क्योंकि इन elements को हमने जब सेट में लिखना है तो कॉमास के साथ सेपरेट करना है. तो मैंने A, E, I, O, U लिख दिया. कंडीशन ये है कि दे शुड बी kept in a curly bracket and elements should be separated with the help of commas. So this is the way to write a set. Next is how to methods to describe a set. There are two methods. First one is the roster method and second one is the set builder form. Roster method is also called tabular method, and in this we directly write the elements of a set in a curly bracket. But in set builder form we use some characteristics, some properties are used, and write it into some wordings, or use some property x such that property holds. So I am going to explain these forms with the help of examples. So I am taking the first example. The first example is the set A of all even natural numbers. So what are all even natural numbers? These are 2, 4, 6, 8 and so on. So when I am saying, when someone says to write it into a roster form or a tabular form, I just write the elements 2, 4, 6, 8 and they are infinite, so I have to use these dots. So this is tabular form to write a set. Next is if I am writing it like this way, x such that, we can some books use such that sign or some use this column, this bar sign, x such that. X is a
natural number and x equal to 2 into n, where n is a natural number. Or set builder form is not a unique form, like I am writing it into two ways: x such that x equal to 2n, where n belongs to n. So what is n? N is a natural number, so I am going, natural numbers are 1 2 3 4 5 and so on. So if I will take the value 1, तो 1, पहला हम 1 लेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू 2 इंटू 1, सो हमारे पास एलिमेंट आएगा 2। फिर हम लोग x की वैल्यू 2 लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4 6 8। तो सेट तो यही बन रहा है, लेकिन हमने उसको डिफरेंट वे से लिखा है, x such that this properties holds. So this form is called set builder form or set builder method. So there is a distinction between them. So there, directly write the elements into a tabular form. In a set builder form, we write it into some type of method, x such that some property holds. I am taking the second example to explain it more. Like a equal to MATHEICS. If you will see clearly, they are the letters of the word mathematics. Sorry. So they are the letters of the word mathematics. So अगर सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखना है तो हमें कुछ प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखना पड़ेगा। टेबुलर फॉर्म में हम डायरेक्टली लिख रहे हैं MATH, डायरेक्टली लेटर्स लिख दिए। लेकिन इन सेट बिल्डर फॉर्म आई विल राइट इट एज A इक्वल टू x सच दैट x इज लेटर, x जो है वो दैट प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, वो x आएंगे जो इस प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? कि लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स के जो लेटर्स हैं उनमें से एलिमेंट्स जो है वो उठा लेगा, तो इस तरीके से वो लिख देगा। सो दिस इज टेबुलर फॉर्म एंड दिस वन इज द सेट बिल्डर फॉर्म. So this is all about how to describe a set. So in next video we will discuss about the types of set.